Hi, Aman. So you have your Lucknow interview in a couple of days. So all the best, first of all, for I am Lucknow. Thank you, sir. So let's do this mock PI to understand your preparation levels. To begin with, Aman, can you quickly introduce yourself? Hi, sir. I'm Aman, 25 years old, born in Bihar, brought up in Delhi. And I've done my 12th from DPS Masar Road and my graduation from DTU Delhi in mathematics and computing. It was new branch, but it had a very good mix of mathematics and computer science. And we had some really interesting subjects like financial engineering, which really excited me to start investing from that age only. And I was consistent with my academics. Along with my academics, I was part of different position responsibilities. I was part of cultural festival as a publicity co-head, and I was part of NGO, and I was also part of hostel council member. These were truly first experience of managerial experience where I was leading groups. And after this, after my graduation, I worked in Capgemini for around 6 months as a senior analyst. Then from past 1.5 years, I'm working with Sagar Engicon Private Limited as it's a construction company. I'm working there as a site engineer and currently working in Ranchi Airport. And yeah, that's all about me. Yeah, talking about my hobbies. I love trekking. I love adventure sports. I love meeting new people. Yeah, that's all about me. Thank you. So have you said thank you? So shall we end the interview? No, sir. It's thank you for asking me to give introduction. Okay, so every time I'll ask you a question, you will tell me thank you. No, sir. Or this is the way you had rehearsed your answer. This is the way you had memorized it. So you just told me the way you had memorized. No, sir. I think since this was first question, I was introducing myself to you. Thank you. It's just a greeting. Thank you is a greeting. Okay. Yes. Okay. So you have studied mathematics and computing. Yes, sir. Okay. So can you tell me, Aman, how to find inverse of a matrix? So, sir, I don't exactly remember. I know the formula. It is determinant of matrix and sorry, adjoint of matrix divided by determinant of matrix. Okay, and how do you find out adjoint of matrix? Sir, adjoint, I don't remember the 3x3 matrix. I remember it for the 2x2 matrix. We just reverse the like the diagonal matrix, and we just do the negatives of the rest of the two matrix. That is adjoint or inverse? This is for adjoint, a 2x2 for a 2x2 matrix. Yes, this is adjoint. Can you so okay, this is the adjoint for a 2x2 matrix. Yes. Okay, got it. So tell me, Aman, you mentioned that you started investing from your graduation days, wherein you studied financial engineering. Yes. So what is the basic what's the basic theory of financial engineering? Sir, it was like coming from mathematics background. It had basically mathematical modeling of financial securities. Okay. We were not because it was in our fourth semester, we were not told in detail, but we were told about financial securities like risky assets, and then financial derivatives, and then some financial securities, and like option pricing, and also about like when we derive Black-Scholes formula, how do we derive it? How do we use partial differential equation to derive those formula? So the mathematical equation that we use, basically we were learning those. From engineering point of view. Got it. So if I have to, let's say, forget about option pricing. If I have to, let's say, do a stock pricing, how will I do? I have to price a stock. So how will you do it? So we will basically calculate the volatility, how much volatile it is, and as compared to the market, as compared to the in India Sensex or Nifty. And then we can accordingly basically price the share. How I am not clear. So let's say some stock is 50% more volatile than the market. I have given you this. So how will you price that stock? So I'm not very clear about this. Sorry for this. I'll look into this. So if you are not clear, why did you give me an answer with full confidence a little, a few seconds back? Because I just suddenly remembered that that's how it was. The volatility was associated with the pricing of the model. No, so volatility is, so what is
what is it called? The volatility of a stock with respect to the market. What there is a specific term for the volatility? What is the term? Sir, I'm not very sure about this, but I think it is beta. Okay, and what is the beta of market? Sir, it is 1. Okay, so okay, and what is this model called in which you use stock pricing? Sir, CAPM, CAPM. Capital asset pricing model. Yes, capital asset pricing. You did not study this as part of your financial engineering, right? We did study, but not in very detail. Okay. So can you tell me, can I use CAPM model? What is CAPM, full form of CAPM? Sir, capital asset pricing model. Can I use this model to price debt also? Sir, I'm not very clear if we can or not. But as far as I remember, it basically tells the relation between risk and return. Okay, so what is CAPM model? Yes, sir, as I told you, it basically tells the relation between risk and return. What? Give me the equation. I don't remember the equation, sir, but yes. Okay. All right. Got it. So Aman, you've studied mathematics and computing. Mm-hmm. Can you tell me what is Lee-Saunders equation? I'm unable to recall right now, sir. Okay. All right. So can you tell me, Aman, let's say if I, talk about, your Capgemini experience. Mm-hmm. Okay. You mentioned that you worked there for approximately, let's say, 6 months. Mm-hmm. And then you moved on to, to the site engineer role. Mm-hmm. Okay. So now help me understand how mathematics and computing and financial engineering are related to what you are doing at Capgemini and in your site engineering role. Looks like that you've done something else, and then you were practicing something else, and then you are right now moving into MBA, but what you like doing is actually trekking. So why don't you do trekking full time? Why would you want to do an MBA which is completely not related with what you have done so far? Sir, I'll answer it in parts. So first of all, answering your first question, mathematics and computing. So it had computer science also. We studied some of the like basic computer science subjects like algorithm, data structures, and we also had DBMS and operating system. So that really helped me in my first job, Capgemini job, where I was working as a senior analyst. My major role was there to deploy software, highly modular software products from like one end to different end in different environments using Jenkins. So my experience from my graduation, which was in mathematics and computer science, helped me there. Now coming to the second part of your question, why I made a switch, sir? Because I was looking for the business opportunity. My family comes from this background. My father works in L&T right now, and my uncle works in Airport Authority of India as a general manager. So I really had this very beautiful opportunity to go and visit the sites and see how the business works and meet with the directors. And after, my question is different. My question is very simple. My question is, you worked there for 6 months and then you left it. So that is what I want to understand. Why did you leave it in 6 months? Yes, sir. So actually, within 6 months only, while I was in February 2020, I had this opportunity to go and visit Ranchi Airport to see what my uncle is doing, to see what kind of opportunity he has, because we always in our family, we had this dinner topic that how other construction companies are doing. So I wanted to gauge in the business opportunity and see if it is possible for me to have my own construction company in future or not. So this is, I got it, Aman. I got it. My point very simple is, why did you work at Capgemini for 6 months? Point is very simple. I'm sure because your family is into this and they did not get into it after you started working at Capgemini. Correct me if I'm wrong. Yes. Your parents or your uncle started working into this field right after you joined Capgemini, right? They were working in it before. Yes. And which basically means that your interest was also in it before as well.
right? So 2-3 things. One is, if you had interest in this domain, one, why did you not study this domain? Why did you not study, let's say, a civil engineering for that matter? That's first question. Second question, why, after joining Capgemini, working there for 6 months without having a meaningful experience, why would you want to switch to another domain, where you think that you are likely to get some excitement or learning, but you don't know whether you will get it or not? You're getting my question, right? Yes, I'm getting your question. Yeah. So answering your first question about why I did not choose civil engineering. So answering this question, sir, at the age of 18, after giving my JE, we basically we don't have as such our inclination toward any domain. No, that's not true. I don't agree. Don't generalize. I had very clear opinion about what I had to do. Yes. So don't generalize it, please. If you want to talk sorry. about, you talk about yourself. Yes, sorry, sir. And talking about myself, I did not. But have then any... you already had parents and uncle working in construction and civil domain. Yes. We had this on dinner topics for like, I've heard this term and have heard this, all these topics throughout my life, but there was no as such inclination that I so also. Why did it happen during Capgemini? Did you not like what you were doing at Capgemini? No, sir. It was great. The learning opportunity was great, and I was liking the work. But as compared to what I was having on the other side, but you had not gone on the other side. So how will you know whether the other side is good or bad? That's my question exactly. My question is very simple. You seem like a person who will switch sides, when he sees a temporary benefit on the other side. That is how it looks like from your profile. I want to understand, why are you doing this? Yes, sir. Sir, it might look like, but as you can see from last 1.5 years, I'm working in construction firm only because I want to understand the. So then, if you really want to understand, work there for 5 years, 10 years. Yes, sir. Sir, I might work. I might work in construction company for my whole life. But while working, I felt while talking with other site engineers and talking with my director also, I felt that there is some knowledge gap which I need to fill in. What is the knowledge gap that you want to fill in? Sir, while working, like one of the brief instance which I remember was when I was having talks with my we were having a discussion on our new project. My directors and site engineers and some general managers from Airport Authority of India. So we were having discussion on new project, but that discussion took it some other curve, and we went discussing on the finance and the supplies. So I really wanted to pitch in. I really wanted to contribute to those conversation, but I was not able to. Why were you not able to? Because of the limited knowledge of domain I have. So that you will not get in MBA, Aman. Sir, but holistic learning experience is what I'm looking forward to. No, but you will not get that at MBA. That's my exact point. In an MBA, you will hardly get a course which is focused on construction. Yes, sir. It's not only about the construction, but like as I told you, that conversation went in from construction to finance and supplies. So all those like broad when we have. So Aman, there will be so many conversations after MBA also, where you will not be able to pitch it. Yes, sir. Because of your limited knowledge. So then you will go to study that also. No, sir. That was a brief instance which I was telling you. But while working also, while taking some decisions, I felt that I could have taken decisions. I want to understand those decisions, Aman. Because this is an instance where you were mentioning that you were discussing and you did not know something. So now you think that that is point number one, is you don't have to pitch into every discussion. Aman. That's point number one. Point number two, no matter how much have you studied, you will always be limited in some sense. And hence you will not be able to, be a master of everything or pitch in everywhere, right? That's the point number two. Okay. And point number three, if you're basically wanting to get into this for, particularly for construction, I think you should go for a management program aimed at construction or real estate, rather than going for a general MBA program, which actually does not focus much on any particular sector.
which is sort of general in terms of understanding the domains like marketing, finance, HR, IT, right? It is not like FMCG. You will study FMCG, you will study IT, as in like services, like construction. Doesn't happen that way. The curriculum is not set that way. Yes, sir. Right. So that is my point. Sir, my inclination, my focus is not very precise. It's not toward construction only. I'm open. But you were telling that you only mentioned that you want to set up a construction business in the future. Sir, I wanted to gauge in the business opportunity. I wanted to look closely how basically the construction company works, and if there is any potential. So there is no potential you figured out. No, sir, potential is there, but it is difficult. As a new player, I found working from last 18 months, I found that it is very difficult for a new player to fight with the local players who are very established, because. And why do they have to fight? Sir, because when there are. Can't they collaborate? Sir, because the local players, they have their resources, they have their, they don't want to collaborate basically because they have their resources available. And so so it's they don't want new players to come in and fight with them. So they don't have to fight. Yes. See, my point to you, Aman, is now you tell me, if you have, let's say, a lot of money, can you capture the construction business? No. Why? What is the hindrance? Let's understand. What is the bottleneck? If I have a lot of money, why can't I do construction business? So we also need to look in the perspective of the kind of work we are doing. If it is risky, like if it has, how much risk it has. And okay, risk in what terms? Risk can be various, Aman. Be specific. Financial risk, it can be physical risk. What kind of risk? It can be physical and it can be financial, both risk. No. In this case, what is the risk? My question is very simple to you, Aman. I would request you to be specific. You have this habit of going round and round, which I have told you in previous interviews also. Yes. Let us be absolutely specific. Okay. Aman, you tell me, if I have a lot of money, can I do construction business? Can I get into construction business or not? You told me that the local players don't let new players come in. Okay. So tell me why. Why in this case, I will not succeed? Sir, answering your first part precisely, no, it is very difficult only with the money. You also need to have knowledge and background. No, I have knowledge. So what you are telling is that new players who want to come in don't have money and knowledge. No, sir, I don't want to say this. Okay, what do you want to say? Sir, the new players, basically, even if we have money and even if we have knowledge, when we fill in the e-tenders, so what happens is basically the government sets a limit. So what the already established player do is that basically they go below the limits, and they just want to capture the. But if I have a lot of money, why can't I go below that number also? Sir, yes. If I am willing to burn a lot of money, let's say I become Reliance Jio of construction, and I am willing to burn a lot of money because I have a lot of money. So then why can I not do this? I'm coming to this point, sir. So, sir, why the established firm is able to do this? Because they have so much resources. They have their mixture plants. They have their daily wage workers are fixed. They don't have to deal with all these things. But a new player who don't have all the mixture plants, who don't have approvals from the query sites, don't have crushers, so they have to look in. So what you are saying is crushers, mixers cannot be purchased with money. So these are some things which I'm also coming to that. Sorry. These are a few things which can't be purchased with money. There is a separate currency which is used for buying these mixers and these the other equipments that you mentioned. Also, the wage workers, if I pay them more, they will not work with me. No, sir. So, sir, wage workers basically work on two, there are two types, if it is a contractual basis or it's a permanent basis. Very good. Yes. So when we as a new player work, so most of our workers work on contractual basis. Okay. So if someone pays more money, they will not come. They want to work at lesser wages because they are happy. And there are people who get easily satisfied. No. So I have still not found answer to my question, Aman, that if I have a lot of money and if I'm willing to burn a lot of money, why can I not get successful? Or why can I not fight the local players? I'm easily able to fight.
I am the Reliance Jio. I am telling you, I am the Reliance Jio of construction business. Why can't I fight? Tell me. I can buy all the equipments that you told. I can, hire people at higher wages, and I can get all this, permissions and everything. I can bid lower than the best established player in the market. Why will I not be successful? Sir, because you will be lacking the business knowledge of that domain. I told you, we have the knowledge. Sir, then then it is fine. Then you agree. If you have the business domain knowledge, if you have that we understood, we have money, we have knowledge. Yes. So if I have knowledge and I have money, I can do this, right? Knowledge, money, resources. Resources I can buy from money, right? Yes. So then if I have knowledge and money, I am good. So some more things, some more background. Tell me. If you have if you have referrals, if you know people who are already from this background, and you can take. I can hire them. I understand. I have a lot of money. I'm the Reliance Jio of construction. I have a lot of money. You're not getting my point, yes, my friend. Yes. I have a lot of money, and I have, I have the knowledge also required for doing this business. Now tell me what is it that I need. I need people with experience. I'll hire them at double the wages. I think you are good to go, sir. This is what I wanted to tell you in the start. We had so much, of discussion into this, and you wasted my time, Aman. I must tell you. You are very good at wasting time. Sorry for this, sir. But I thought, yeah, because for a business to run, okay, you need expertise. Aman, you tell me, what is it that you want to achieve quickly in 1 minute without wasting any more time? Yes, sir. So, sir, I would say for next 2 to 5 years, in short term, I just want to learn the holistic experience of the business domain, how the business works. Okay. And in the long term, I want to be part of the senior management team of a premier company where my decision makes impact on the company operation. So this you want to do in construction or? In any domain, sir. In any domain. I don't have any particular inclination toward any domain right now. Sector. Yes, sector. Okay. But why? But you seem so interested in construction. You like learning construction. You left Capgemini for construction. Yes. Yes. Right? Did you actually do it only for money? No, sir. It was definitely not for money. Yes, it was. Did you get some hike moving from Capgemini to this? No, zero hike. Zero hike. Still you moved. Yes. I must tell you, bad decision. Because see, you don't want to continue in construction. That we are very clear, right? You moved from such a great company wherein you could have learned so many things in an organized manner to this place where you've spent some 1.5 years where you are claiming that you are doing some very interesting work, but apparently you are not interested in it, clearly. So Aman, let's come to the close of this. Okay. I hope so. This is kind of a stress interview that you can get. Okay. And I think Aman, what I must tell you is कि बहुत सारे stress interviews जो होते हैं वो candidate की वजह से ही होते हैं. ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे डिस्कशंस हमने करे, ठीक है, बीच में कुछ जगह पे तुमने बहुत अच्छा किया. आई वाज रियली हैप्पी. ठीक है. मैथमेटिक्स में तुमने जो इनवर्स वाला पॉइंट बताया, दैट वाज वेरी गुड. वो सर आपके वाले पॉइंट से आपने किसी उसमें बताया था कि आपसे पूछा था, तो उसको मैं देख लिया था. नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया तुमने. तो तुम तैयारी कर रहे हो, व्हिच इज वेरी गुड. तुमने फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के अंदर जो तुमने पहले पढ़ा था उसके अंदर भी तुमने सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया. सो आई वाज हैप्पी विथ योर आंसर देयर आल्सो. सो दोस टू एंगल्स आई रियली लाइक. तो मुझे लगा कि आज तुम्हारा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा जा रहा है, एंड आई वाज वेरी हैप्पी आल्सो फ्रॉम विद इन की चलो आज तो अमन अच्छा कर रहा है, वेरी गुड. बट उसके बाद ना धीरे धीरे तुम वही ट्रैप में रोज फंसते हो. एक ही ट्रैप है तुमको. तुम्हारा केस ये है कि वो शिट, केला का छिलका गिरा हुआ है, अब तो फिसलना पड़ेगा. ठीक है. तो यहाँ पे इशू क्या है ना अमन, की तुम्हारा आंसर थोड़ा सा, मेरे को ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं जब वही क्वेश्चन पूछा जाए तुम फिर से फंस जाते हो, बार बार फंस जाते हो. तो इसका आई थिंक थॉट प्रोसेस अभी भी कंप्लीट नहीं है तुम्हारा, कि 6 महीने में क्यों छोड़ दिया. कोई भी पूछेगा
यस सर। ठीक है, जिसको भी तुम बताओगे वो पूछे, या तो तुम ये बोल दो कि कैप जेमिनाई वाला एक्सपीरियंस तुम खुद से मत लाओ, ठीक है, या तो तुम ये बोलो कि लास्ट वन एंड हाफ ईयर्स आई बीन वर्किंग विथ जो भी इस कंपनी का नाम है अच्छा, साइट हाँ, इंजीनियर, अगर वो पूछते हैं कैप जेमिनाई तब तुम कैप जेमिनाई लेके आओ। अच्छा, हाँ, ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये रहा। हाँ, ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर वो कैप जेमिनाई आता भी है और वो पूछते हैं कि 6 महीने में तुमने क्यों स्विच किया था, ठीक है, तो तुम्हारा जो रीजन है वो थोड़ा कन्विंसिंग होना चाहिए। ठीक है, हाँ, तुम्हारा रीजन एकदम ही कन्विंसिंग नहीं लगा मुझे हाँ, कि 6 महीने में तुम क्यों छोड़ोगे कैप जेमिनाई। ऐसा भी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन में तुमने कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट गेन कर लिया है, अब तुम हाँ, आगे कंस्ट्रक्शन में ही रहना चाहते हो, हाँ, हाँ, ऐसा भी नहीं है। हाँ, तो ये बहुत ही थोड़ा फेक सा लग रहा है कि मेरे को इतना ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, पहले से कोई इंटरेस्ट नहीं था। हाँ। ठीक है, ये कैप जेमिनाई के दौरान ही, ऐसा तो नहीं है सर कि ये पेरेंट्स। इंटरेस्ट एक्चुअली सेक्टर का नहीं है, पैसों का है, कह सकते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी का था इंटरेस्ट, कि क्या इसमें बिजनेस बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें? है। सर इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो बहुत है। क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताओ ना। मतलब अभी काफी सारे, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं काफी सारे इंडिया में एयरपोर्ट के, और मतलब देयर आर वर्क, बहुत सारे वर्क हैं, और मतलब एक एक वर्क काफी 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 हैवी अमाउंट का होता है, और मतलब आपके अगर आप ढंग से मैनेज कर रहे हैं तो है, पैसा बहुत है इसमें। आई वुड से प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा है। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा है तो रिस्क भी वैसा ही है, हाँ, रिस्क और भी बहुत है। उसके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी वैसा ही हाँ, इन्वेस्टमेंट भी बहुत है ना। हाँ। तो इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, तो मैं दूर से ही बता दूंगा। हाँ, मैं यहीं से बैठे, मैंने तो कोई प्रोजेक्ट नहीं किया, मैं तुम्हें बता दूंगा चाहिए जो और तुम्हें बिजनेस इन्फॉर्मेशन। अपॉर्चुनिटी सर मेरे लिए थोड़ा इसलिए भी ज्यादा था कि मेरे थोड़े अंदर कनेक्शंस थे। तो क्यों नहीं तो हुआ फिर बिजनेस? सर बिजनेस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि एक तो मैं, मतलब जब मैंने काम करा तो मेरे को नहीं करना था उतना स्ट्रगल, मेरे को इधर आना था, इसमें आना था मैनेजमेंट। तो फिर गए क्यों? मेरे को सर वो देखना था, मेरे को अपॉर्चुनिटी वो देखना था कि क्या है, मतलब सिर्फ बोलते हैं लोग या फिर मैं जाके सही में देखना चाहता था। और क्या देखना एक्चुअली चाहते थे? कि पैसा है कि नहीं है। पैसा है, पैसा हर है। चीज में, जो भी हाँ, चीज अच्छे से करो उसमें पैसा है। हाँ, तो मतलब क्या देखने वाली क्या बात है? तुम मेरे को बोलोगे कि मैं जाके देखना चाहता हूँ कि बिस्लरी वाला जो लाइन है, जो वाटर वाटर फिल्टरिंग एंड हाँ, सीलिंग एंड बट सेलिंग में पैसा है कि नहीं, पैसा है। सर अगर आपकी फैमिली अगर प्लांट कोई ऑलरेडी बनाती है, अगर आपकी कोई हाँ, फैमिली है वो किले में करते हैं काम, तो आप एक बार ट्राई करोगे ना कि एक बार यार नहीं जाकर मैं नहीं देखते हैं। करूंगा, मैं जरूरत नहीं, जरूरी नहीं है कि मैं करूंगा ना अमन, देखो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट है कि मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीजें कर रहे हैं हाँ, और वो उसके अंदर सक्सेसफुल हैं, पर मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे लगता है कि मैं वैल्यू ऐड करूंगा। ऐसे थोड़ी कि कोई और मेरी बिजनेस मेरी फैमिली में कर रहा तो मैं भी तो मैं उन्हीं से पूछ लूंगा कि भाई बताओ पैसा है कि नहीं। ऐसा, Fact है। हाँ उन्होंने तो कहा था है, मतलब और है भी। तो तुम्हें क्यों नहीं मिला पैसा अगर है तो? आ, सर यही रीजन थे कि वहाँ पे फाइट है, जो लोकल प्लेयर्स हैं और जो कोई न्यू आ रहा है उसकी फाइट है, बहुत तगड़ी फाइट है। ओके। और अभी तो शायद काम भी रुक जाएगा, अभी एक न्यू टेंडर आया है, मैं आप देखना झारखंड, आप तो जाते हो ना रांची हाँ एयरपोर्ट पे, अभी हाँ। देखना अभी अच्छा खासा वहाँ पे प्रोटेस्ट होने वाला है तगड़ा। क्यों? क्योंकि जो लोकल प्लेयर हैं वहाँ के, कोई गोप करके हैं, तो वो लोग बिल्कुल प्रोटेस्ट कर दिए, क्योंकि जो जो नए प्लेयर आ रहे थे ना बाहर से, पटना वगैरह से, तो उन लोगों ने टेंडर उठा लिया, उन लोगों ने थोड़ा कम बिड करके टेंडर उठा लिया। और वो जो थे वो मतलब वहाँ के गूंस टाइप के होते हैं जो कंस्ट्रक्शन जो लोकल होते हैं, अब वो लोगों ने तो पूरा डंडा कर दिया कि ऐसे कैसे 50-100 करोड़ का काम किसी और के पास चलेगा। ओके, अच्छा तो ठीक है, चलो फीडबैक पे आते हैं अमन। तो फॉर्मल कॉन्वर्सेशन में सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यू कांट फाइट द लोकल, यू डोंट हैव टू फाइट पहला। ठीक है, थोड़ा सा वर्ड्स का सिलेक्शन पे ध्यान दो, अभी जैसे तुमने बोला डंडा कर दिया, ठीक है, अभी ये फॉर्मल सेटअप के अंदर ये तो ऐसी सर बातें, कैजुअल, ये तो अपना नहीं कैजुअल था ना। कैजुअल नहीं है। अरे मैं कौन सा, मैं तुम्हारे घर रोज खाना खाने आता हूँ, मुझे ठीक है, लगा। नहीं गलत बात है, समझो। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान दो अमन। देखो खाली सूट पहन लेने से ना पॉलिश नहीं होता है इंसान, ठीक है। सर वो मुझे लगा वो कट हो गया इंटरव्यू, अब एज अ नहीं फ्रेंड बात इंटरव्यू कर रहे हैं। कट, अरे नहीं फ्रेंड बात ही कर, एज अ फ्रेंड ही कर रहे हैं, हाँ, बट मैं इसका जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स को थोड़ा सा ठीक करो कि व्हाई आई स्विच्ड फ्रॉम कैपजेमिनी, मैंने बोला कि वर्ड स्विच यूज करो, हाँ, ठीक है, क्यों कर रहे हो, बेसिकली समझो ना चीजों को, थोड़ा सा प्रॉपरली प्रेजेंट करो, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स थोड़ा सा इंप्रूव करो, ठीक है। अच्छा, अब
मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2-3 चीजें ध्यान से सुन लो, ठीक है। सबसे पहला, तू एक कैब जेमिनाई का रेफरेंस मत लो। अगर तुम अपना साइट इंजीनियर वाला एस्पेक्ट बताओ, ठीक है, जरूरत ही नहीं कैब जेमिनाई 6 महीने। कैब जेमिनाई उठाएंगे तो बोल देना कि सर मैंने आई स्टार्टेड वर्किंग विद कैब जेमिनाई, ठीक है, एंड कैब जेमिनाई में भी I was working with some construction project. ठीक है, so then with that I gained interest and I wanted to not only be making strategy without understanding the basics of it. So मतलब अगर आपने कोई चीज को समझ, सीनियर एनालिस्ट का था और मतलब स्ट्रेटजी से तो बहुत दूर हूँ। सीनियर एनालिस्ट क्या करता है सर? कैब जेमिनी में तो लिटरली, कैब जेमिनी आप छोड़ दो, इवन जितने भी आप एमएनसी ले लो, यहाँ के जो आईटी वाले फर्म है, कोड कर रहे हैं बैठ के, सब कोड कर रहे हैं, एवरीवन इज कोडिंग। सर एवरीवन इज नॉट, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ना जनरलाइज तुम बहुत करते हो। जो तुमको लगता है ना कि तुम्हारा जो नॉलेज है वही संसार है, तो ऐसा है नहीं। ये जैसे तुमने बोला कि 18 की उम्र तक तो क्लैरिटी नहीं होती, ये सब चीजें मत बोला करो। सामने वाला ना ऑफेंड भी हो सकता है कभी, कि मतलब उसको लगेगा कि यार तुम्हें लगता है कि तुम्हें नहीं है तो बाकी किसी को भी नहीं है। तो ये जनरल वाले स्टेटमेंट्स ना डेंजरस होते हैं, ये सब मत करो। जब भी कुछ बोलते हो तो बोलो आई बिलीव या आई थिंक, समझ रहे हो? ऐसे नहीं कि जनरल दे दिया 18 में तो किसी को कुछ नहीं आता, 18 में सब बेवकूफ होते हैं, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो आई थिंक ये सिंपल सी बात है। कैब जेमिनाई में तुम ये मेंशन कर सकते हो कि कैब जेमिनाई में अगर तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट वाला रिलेशनशिप नहीं था, तुम ये मेंशन कर सकते हो कि yes, I started with Capgemini, but with the experience that I have had, or with the interactions that I have had with my family members, I realized that construction was a good opportunity for me. I had seen construction, coming in, construction from the angle of my parents, from the angle of my uncle. And I believe that with my acumen or with my understanding, I could really create something if I get into this. So then I moved into this site engineering kind of a position where I worked for a few years, and then I realized that there are a few drawbacks. For example, one can't get into this setup, and one can't get the tenders or the business opportunities unless they have the required knowledge, domain expertise. That's one. Second, the business acumen to drive things. Third, investment support, right? I believe that with with an MBA, if I get an opportunity to work with a construction firm, in future I can make all these possible. I will learn, I will gain knowledge, I will learn business skills from the best of professors, and with a peer network, and with a with a organized player, with a big construction company, I can make these opportunities, or I can create these opportunities, I can win these opportunities. ठीक है, समझ में आया? मजा आया? हाँ, ये आंसर बनाएंगे। तो आंसर में कन्विक्शन मेरे को कम लगता है अमन तुम्हारा, ऑल्दो आंसर में कोई ज्यादा फॉल्ट नहीं, पर मैं तुमको ग्रिल कर रहा हूँ ये चेक करने के लिए कि तुम खुद कितना कन्विंस्ड हो अपने आंसर से। वो मेरे को दिखाई दे जाता है कि नहीं यार, बंदा कन्विंस्ड ही नहीं, अपने ही आंसर से कन्विंस्ड नहीं। एक्चुअली जब क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन होते हैं तो कोई एक पॉइंट ले लेना वहां पे सही रहता है कि तुम पूछो। चलो मैं इंटरव्यूअर हूँ, तुम इंटरव्यूई बन जाओ। मैं इंटरव्यूई, तुम इंटरव्यूअर। चलो मैंने आंसर बताया, अब तुम पूछो क्या पूछो। What do you think about India's stand on यूक्रेन एंड रशिया वॉर? नहीं, यूक्रेन रशिया की बात नहीं कर रहे। इंडिया स्टैंड ऑन यूक्रेन बहुत ही जेनरिक क्वेश्चन हो गया। वो भी मैं बता दूंगा। सुनो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन की बात हो रही थी। मैंने एक आंसर दिया है फॉर वाई MBA। इसके ऊपर तुम क्या क्वेश्चन सोच सकते हो बताओ? क्वेश्चन पे क्वेश्चन की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है ना। इंडिया स्टैंड ऑन रशिया यूक्रेन तो क्या ही, इंडिया स्टैंड ऑन रशिया यूक्रेन तो बड़ा सिंपल है कि रशिया से हमारा डिफेंस सिस्टम लिंक्ड है, और हम ये भी नहीं चाहते कि रशिया यूक्रेन को प्रॉपरली बुली करे या उसको ज्यादा वहां पे मैसेकर हो। उसका रीजन बड़ा ही सिंपल है। अगर इसका सेकंड क्वेश्चन आता है कि तुम्हें नहीं लगता कि एथिकली ये बिल्कुल ही गलत है? क्या गलत है? कि हम रशिया को सपोर्ट करें बिकॉज ये तो एक्ट ऑफ वॉर हो रहा है। तो अब यहाँ पे मैं हाँ ना बोल दूं या फिर मैं और डॉज करूं थोड़ा?
नहीं तो मैं दो चीजें, सबसे पहले तो अमन ना तुम चीजें समझ रहे नहीं रहे हो कि मैं समझा नहीं रहा हूँ, लेट मी हेल्प अंडरस्टैंड। हम लोग बात कर रहे हैं ये सबसे पहले YMBA वाले एस्पेक्ट की, ठीक है, हम लोग बाकी एस्पेक्ट पे बाद में चलेंगे, हाँ ठीक है। अब जहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है ऐसी चीजों के ऊपर जैसे YMBA वाला है, हाँ तो उसमें आपको डॉज करने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ आप आंसर करो। आई थिंक तुम्हारा स्टोरी अमन देखो, अब फेक तो नहीं कर पाओगे इससे आगे, हाँ हाँ तो बी ऑनेस्ट, हाँ ठीक है। हाँ तुम्हारे में मेरे को ऑनेस्टी की कमी लगती है, जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ, हाँ ठीक है। तो मुझे लगता है कि तुम अपना ही कुछ घुमाने की कोशिश कर रहे हो बात को, और वो तुम ना मेरे को घुमा सकते हो, मेरे को नहीं घुमा सकते, तो तुम पैनल घुमाना तो भूल जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा पैनल को घुमाना, ठीक है। तो घुमाओ मत, ऑनेस्ट रहो, अपनी बात को सही तरीके से रखो। जैसे मैंने तुमको तुम्हारी YMBA स्टोरी बताई, वही है एग्जैक्टली, है कि नहीं, करेक्ट है ना। तुम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ गए जिसका इंक्लिनेशन तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिला, पर वहां जाके तुमने बहुत सारी चीजें रियलाइज की दैट फॉर अ न्यू प्लेयर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। मैं यही पॉइंट एक्चुअली प्रूव करना चाह रहा था उस टाइम पे, जो तुम समझना ही नहीं चाह रहे थे कि इसके लिए क्या जरूरी है, मनी जरूरी है और क्या जरूरी है, नॉलेज जरूरी है। अब तुम वहां से भी पिक कर लेते कि सर यही तो मैं करना चाहता हूँ थ्रू MBA, तुमने तो इंटरव्यूअर तुमको हिंट देने की कोशिश कर रहा है, पर तुम हिंट पकड़ोगे कि तुम उसमें आर्ग्यूमेंट करते रहोगे, वो तुमको तुम्हारा लुक करा, ठीक है। तो अभी बड़ा ही सिंपल है, तुम्हें ये बोलना है कि सर मैं I have realized that as an individual, I could not do it because of various, I could not make it big because of various, reasons. One obviously is the domain knowledge of the business. Second is the business acumen required to create business opportunities, convert business opportunities, win business opportunities. And finally, the investment required. So now I will gain all three and I'll work with a construction firm and I'll create these opportunities, win these opportunities, make it big. Simple है। हाँ तो मतलब मेरे को ये नहीं बोलना कि आई एम नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड एनी सेक्टर। तुम कंस्ट्रक्शन बोल सकते हो कि एज ऑफ नाउ मेरा इंक्लिनेशन कंस्ट्रक्शन में है, ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। सिविल हो सकता है, रियल एस्टेट हो सकता है, ठीक है। रियल एस्टेट में भी जरूरी नहीं है कि तुम साइट पे ही काम करो, तुम स्ट्रेटजी कर सकते हो, तुम सेल्स कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो पॉइंट इज कि तुम अपना इंक्लिनेशन बता रहे हो, तुम ये नहीं कह रहे हो कि है ना, तुम्हारी कोई कहानी ही नहीं बनी, ठीक है। तो वो कहानी कोहेरेंट स्टोरी अब तुमको समझ में आया? हाँ मेरे को आ गया समझ, एकदम समझ में आ गया है। कोई कितना भी ठोक बजा के भी पूछेगा तो बता दोगे? हाँ मतलब मैं तो सर कितना भी ठोकते बजाते रहो मैं आपको नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, तुम एक्चुअली तुम भटक जाते हो, अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो मैं बता दूं। सर अब मतलब हाँ, अगर मतलब डिपेंड करता है, बहुत ग्रिल हो जाता है तो फिर सर मतलब। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ भाई अमन की ग्रिल होगा, हाँ क्योंकि तुम्हारी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है, हाँ तो ग्रिल होना तो बहुत नेचुरल है, हाँ समझ रहे हो। हाँ तो ग्रिल तो तुम्हारा होने ही वाला है, तो तुम मान के चलो। हाँ नहीं सर, स्टार्टिंग में तो पूरा फुल कन्विक्शन के साथ इनिशियल तुम्हारा कोहेरेंट। अच्छा था, हाँ इनिशियल कोहेरेंट तुम्हारा बहुत अच्छा था, आई एब्सोल्युटली एग्री, नो डिनाइंग द फैक्ट। तुमने स्टार्ट बहुत अच्छा किया था, इनिशियल वाले क्वेश्चंस भी तुमने अच्छे करे थे, जो मैथ्स वाला क्वेश्चन था, फाइनेंशियल वाला क्वेश्चन था, ऑब्वियसली तुमको पूरा अच्छे से नहीं पता था, विच वाज नॉट एक्सपेक्टेड आल्सो, बट हाँ जो तुमने आइडिया दिया आई रियली लाइक्ड इट, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो सुन के, जो तुमने बताया फ्रॉम नॉन फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तुमने कैपम के बारे में बताया तो बड़ा सिंपल है कि वहां तक अच्छा लगा। उसके बाद वाला जो एस्पेक्ट्स था वहां पे बहुत लूज था, ठीक है। मैंने तुमसे बोला कि कैन आई डू दिस विथ मनी एंड नॉलेज, तुमने पहले बोला नहीं, फिर फाइनली तुम मान गए कि यस मनी एंड नॉलेज से हो जाएगा, तो तुम वही मान जाते। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, तुम्हारे साथ क्या होता है ना कि तुम्हारे ना ऐसे वेव्स उड़ते रहते हैं, तुम अचानक से कोई वेव पकड़ते हो और बोल देते हो जल्दी से, और उसके बाद फिर सॉरी खुद ही फील करने लगते हो। जैसे मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, तुमने बता दिया, फिर मैंने पूछा आर यू श्योर, तुमने बोला नहीं नहीं सर आई एम नॉट श्योर, गलती से बोल दिया, माई बाप माफ कर दो। तो ये नहीं करना, या तो आप बोलो मत, या तो आप बोल रहे हो तो फिर आप स्टिक करो, है ना। तो ये थोड़ी सी इमेच्योरिटी कहीं कहीं मेरे को दिखाई दे रही है,
ये थोड़ा सा पॉलिश कर लो, अपना YMBA वाला आंसर थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लो, ठीक है, अपना स्टोरी बेसिकली तुम थोड़ा सॉर्ट आउट कर लो। तुम्हारा स्टोरी में ही मेरे को मेजर मुद्दा लगता है हमेशा से ही, मैं तुमको डे 1 से यही बोल रहा हूँ कि तुम्हारा स्टोरी में ही मेरे को मुद्दा मुद्दा सबसे ज्यादा लगता है। बाकी पर्सनैलिटी वाइज यू आर गुड, ठीक है, कम्युनिकेशन वाइज यू आर गुड, ठीक है, तुम बहुत अच्छे से तुम प्रेजेंट करते हो अपने आप को, तुम्हारा डिमीनर अच्छा है, ओवरऑल यू नो आई थिंक प्रेजेंटेशन ऑल्सो इज गुड। तो आई थिंक इसके अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। तुम्हारा स्टोरी अगर तुम्हारे दिमाग में एकदम सेट है कि ये मेरा स्टोरी है, मेरे को इस तरीके से प्रेजेंट करना है, तो फिर तो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनीथिंग व्हिच विल स्टॉप यू फ्रॉम कन्वर्टिंग IIM लखनऊ। आई विल गिव माय ठीक है, बेस्ट सर, कल बैठ के करता हूँ थोड़ा और प्रिपेयर। थोड़ा और प्रिपेयर करो। इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज, कल एनीवेज आई विल कनेक्ट वंस विथ यू अमन, ठीक है, करो, मोटिवेशन रखना है, ठीक है। कनेक्ट कहाँ पे सर? आई विल आइदर कॉल यू और यू कैन टेक्स्ट, ठीक है, ठीक है। तो कल मॉक PI नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कल मैंने मॉक PI में अगर तुम्हें ग्रिल कर दिया तो तुम्हारा ठीक है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि एक दिन पहले मैं किसी को भी ग्रिल करूं, मैं नेगेटिव फीडबैक ही नहीं दे पाता हूँ किसी को भी। तुम्हारे केस में अमन आई थिंक आई सी अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट, जैसे मैंने बताया पहले जो ये एस्पेक्ट्स थे इनमें भी हिला हुआ मामला था, अभी एटलीस्ट कुछ एस्पेक्ट्स में तुम, पहले 12th क्लास में 87% आ रहा था। हाँ, तो अभी 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 कुछ एस्पेक्ट्स में तुम अच्छा कर रहे हो, विच इज गुड टू सी, अच्छी बात है, वेरी नाइस। बट बाकी के एस्पेक्ट्स में आई थिंक अभी भी थोड़ा सा करना होगा। अमन, तुम्हारा YMBA वाला मैंने आंसर बता दिया है, अब इसके बाद भी अगर तुम डिलीवर नहीं कर पाए तो सर ये रिकॉर्डिंग कब तक आ जाएगी? ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे को मैं आज ही दे दूंगा या कल सुबह दे दूंगा, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट अमन, ठीक है, मोटिवेटेड रहना है, ठीक है। तुम जरूर कर, तुम्हारे को मैं IIM लखनऊ में देखना चाहता हूँ दोस्त, ठीक है। और तुम बिल्कुल जा सकते हो, तुम्हारे जैसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं पास्ट में जो IIM लखनऊ गए हैं, ठीक है। तुम IIM लखनऊ कन्वर्ट करो, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा, तुम जहां बोलोगे वहां, ठीक है। मैं तो रांची में भी कर सकते हैं ट्रीट। रांची में ही ले लेंगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ये YMBA वाला थोड़ा सॉर्ट आउट कर लिया, ठीक है, मैं करता हूँ, ठीक है। कल आई विल कनेक्ट विद यू, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ओके, थैंक यू, बाय, ओके बाय।